I would now like to request Mr. Asfand Yar Farrukh to share his views on current opportunities and challenges for retailing in Pakistan. He is also the co-founder of the Chainstore Association of Pakistan and its newly elected chairman. He also holds the position of the managing director of Urban Brands and Hub Leather. Please welcome him. Assalamu alaikum. I'm going to keep it a bit of a mix of English and Urdu. हमारे non-Urdu speaking भी लोग हैं तो कोशिश करेंगे और slides के ऊपर थोड़ा सा आपके साथ share करेंगे कुछ thoughts जो CAP के अंदर Chainstore Association के अंदर हमने कुछ thoughts develop किए हैं. But आप सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया तमाम लोगों का I think हमजा भाई ने भी और तारिक भाई ने बहुत अच्छी I think अच्छी तरीके से उसको open किया है. I'm very happy and very proud to be here, very privileged to be elected the chairman. Recently, my 1st October से हमारी change of charge हुआ है, तो very happy to be taking things forward. Alhamdulillah, I've been involved since the beginning, but of course अब एक नई responsibility है. Just I want to first start off with आज का जो event है, इससे कि हमारे साहब ने और तारिक साहब ने ये बताया कि this is by the industry, for the ecosystem. तो हमारे पास अगर आप already अगर आपको मौका नहीं मिला है तो I hope that you will be able to catch the agenda. तो आप QR code आपके पास भी है, यहाँ से भी आप you can scan it and see what the agenda is today. So we have, I think we have a wide variety of topics today that we are addressing. Of course, core retail, the challenges, the opportunities, as well as sort of where we stand. और आगे हमें किस तरह से इसको लेके चलना है रिटेल को इंशाल्लाह और मिल के लेके चलना है एंड विद इन दिस देयर आर फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट देयर आर सो मेनी एरियाज जिसमें रिटेल कनेक्ट करता है और इस अम्ब्रेला के अंडर आप अगर देखें तो जैसे कि बात पहले हो रही थी कि 18% ऑफ द GDP इज जस्ट द रिटेल एंड होलसेल ट्रेड इन पाकिस्तान. ठीक है, 20 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है, $40 बिलियन. दिस इज़ रिटेल इन पाकिस्तान. ठीक है जी. एंड उसको अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक डिफरेंट लेंस से देखा जाता है. उस पर भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ. अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिस नज़र से रिटेल को देखा जाता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, और ये एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है. एंड ज़ाहिर है उसके अंदर एक सबका एक रोल है. द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ अस, द ओवरऑल इकोसिस्टम, कि ये जो सेक्टर है ये टैक्स इवेजन करता है. ठीक है, ये स्मगलिंग में को फ़रोग देता है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, इंपोर्टेड आइटम क्यों होते हैं. तो हर चीज़ को रिटेल के अंदर यहाँ पे ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा होता है बजाय ये कि उसकी एक्चुअल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी को. तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होने की ज़रूरत है कि इसको हमें ख़त्म करना है, इस नैरेटिव को. ज़ाहिर है इसमें जो गलत काम है वो भी हम एज चेंस्टोर एसोसिएशन हमारे ब्रांड्स नहीं बिलीव करते. बट वी हैव टू इंश्योर दैट दिस नैरेटिव, दिस थिंकिंग जो है इसको हमें चेंज करना है. और ये नहीं कर सकते कि हम फाइट करें. वी हैव टू वर्क ऑन इट टुगेदर टू चेंज दिस पैराडाइम, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट पाकिस्तानी रिटेल इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ अबाउट. एंड ओवरऑल भी उसके अंदर बहुत सारे रिटेल के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमें दूर करने हैं. और ये लग्जरी इज़ नॉट अ बैड वर्ड. फॉर एग्जांपल लग्जरी हम बात करते हैं यार लग्जरी बंद कर दो, लग्जरी इंपोर्ट्स, वी डोंट वांट लग्जरी इंपोर्ट्स, व्हाई आर वी इंपोर्टिंग लग्जरी आइटम्स एंड सो ऑन. दिस इज़ वेयर इनोवेशन हैपन्स, वैल्यू एडिशन हैपन्स. When there's competition from the outside, when imported goods come in, not saying that everything should be imported, but when imported goods come into Pakistan, that's when we compete, our local goods get to compete with them. And we get to, we are competing on the level playing field where we have to improve the quality and the offering that we have. If you're going to close off and say no imported goods, then, we're going to just be where we've been for the last several years, for example. In terms of tax evasion, I want to point out one thing is that we talk about our tax to GDP in this country being 9 to 10%. Retail sector, the organized retail sector has a tax to GDP of 20 to 25%. The problem is the rest of the 90% is at a very low rate. And then also the manufacturing sector is also
contributing a lot of the taxes from them, which we are actually charging to the consumer, especially in FMCG goods. So there are a lot of distortions and there are a lot of myths that we have to bust, but we have to be very clear about them first कि ये हैं क्या myths, ये misconceptions हैं क्या, तभी हम इसको counter कर सकेंगे ना. तो हमारा मकसद यही है कि इसके बारे में आप लोगों को हम खुद पहले रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं, फिर हम आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं. Smuggling, unfortunately, is a big challenge. We have to crack down on this because it does not then allow us to improve and ensure that the revenue is going to the government and that there's a level playing field of items that are coming into this country. Even if you're importing, you're paying duties and taxes. But if you're competing against smuggled goods, then that is not okay. That should not be happening in this country. So there are two primarily, if we look at कि पाकिस्तान के अंदर दो रिटेल हैं, एक इनफॉर्मल है, एक फॉर्मल है, यानी जो आपके लिए अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं. अब दोनों का बहुत बड़ा रोल है. Both have a very important role to play in Pakistan, and they are playing it. Right? This is where the 18% GDP, 10 million jobs, 20 trillion rupees of revenue, ecosystem, the whole value chain contributing. So they are both important. So our job is to support both and to make the SME, the micro business, to graduate and become better and better and better and grow. So in Pakistan, if we have 10% organized retail, India has almost 20. Indonesia is above that. Other countries are even more in terms of, but if we look at our own region, we need to increase the size of organized retail in Pakistan. But it's not going to happen by taking the market share. We have to help businesses along the way. That is our belief as the Chainstore Association of Pakistan. Now, when we talk about, I was talking about what the sort of the perception has become in Pakistan of retail. What is the perception in other countries? You can see here, the President of the United States is very clear about what retail is, importance is, how it contributes to jobs, how it drives the economy. Many Asian countries which have finally figured this out, Philippines, Singapore, many countries, and I'm not talking about the developed countries, I'm talking about the developing countries who are also in a similar situation or ahead of us. They all know and realize the importance of retail. This is what we have to achieve. So that in our country also, हमारे मुल्क में भी रिटेल की इम्पोर्टेंट डेवलप हो, और हम अकेले नहीं कर सकते, हम सब ने मिल के करना है ये काम. इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि अब वो रिटेल को बहुत वो करते हैं, उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और उससे उनकी इनोवेशन, उनकी वैल्यू एडिशन, उनकी इकोनॉमी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बेहतर हुई है. तो ये सिर्फ रिटेल वाली बात, कारोबारी ट्रेडिंग नहीं है ये काम, ये पूरा एक वैल्यू चेन है जो कि इन्वॉल्व है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करके और डिसीजन मेकर्स तक पहुँचानी है बात. ये हमारा इस वक्त पोजीशन है. अगर हम देखें लेफ्ट साइड कॉर्नर लेफ्ट पे, पाकिस्तान इज देयर in terms of digitalization, in terms of overall its maturity of the market. We need to bring this up, and we cannot fall behind. Now, this is the first challenges we cannot fall behind. We have to work together to stay with this pack, and then eventually move up towards maturity. First, digital disruption is happening, maturity is happening. So all these countries that are developing or have already gotten there, we need to be getting there. So why are we in the back corner? We need to be moving up. It will not happen by itself. अब रिटेल पाकिस्तान के लिए 2035 तक क्या कर सकता है हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, एज एसोसिएशन, एज अ बॉडी, एंड व्हाट, बिकॉज वी हैव टू हैव अ विजन कि हमें लेके कहाँ जाना है रिटेल को पाकिस्तान में, मिलकर लेके जाना है पूरी इकोसिस्टम ने. जैसे मैंने कहा, रिटेल बूस्ट इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. ये हम देख सकते हैं. इट्स हैपनिंग बिफोर आवर आइज. Through today's conference and the initiatives we are taking, हम बिलीव करते हैं कि $5 billion एक्सपोर्ट्स में हम ऐड कर सकते हैं, रिटेल सेक्टर मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर, जो कि अभी है नहीं. मुश्किल से $200 billion की एक्सपोर्ट हो रही है जो पाकिस्तान के ब्रांड्स कर रहे हैं. डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी बहुत पोटेंशियल है, डायरेक्टली भी बहुत पोटेंशियल है. और 10 जो अभी हमारे पास 1 करोड़ जॉब्स हैं जो पाकिस्तान की ओवरऑल रिटेल सेक्टर में है, उसको हम डबल कर सकते हैं 10 साल के अंदर. बिकॉज दैट इज द पोटेंशियल. दैट इज, इफ यू लुक एट इकोनॉमिक ग्रोथ, यू लुक एट ऑल द फैक्टर्स, यू लुक एट अदर कंट्रीज आर डूइंग, retail can also grow. My needy Pakistan mein, we need 5 million jobs a year, almost. So retail can contribute to that. But we need to let it flourish. We need to let it move forward. These are 5 things holding us back, in our view. One is, this is a challenge. This is everybody's challenge right now, is slow economic growth. Okay? That's not what we can do about, but we can work on it. Cost of doing business has really increased, has doubled in Pakistan, especially utilities, taxes.
general inflation, that's obviously this is holding us back, but we have to tackle it somehow or the other. Over-regulation is a big challenge for retail. We have over 30, some says 50, in some cases administrative bodies और जो authorities होती हैं जो कि हमें regulate करती हैं. तो अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर अगर 30 है तो रोज़ एक दिन तो आपने एक बॉडी के साथ तो आपने मुंह लगना है ना उनके, तो फिर काम क्या करेंगे आप अगर आपने रोज़ ही आपने एक एक से आपने डील करना है. आप सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो इस बिज़नेस में और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं. लेकिन रिटेल चूँकि फ्रंट होता है, रोड साइड पे होता है, हर बंदा मुंह उठा के आ जाता है. ये रियलिटी है. वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस. ओवर रेगुलेशन इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फेसेस एंड दैट्स व्हाई द इनफॉर्मल सेक्टर डज नॉट वांट टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड. कहते हैं भाई चुपचाप बैठो, काम करते रहो, नो प्रॉब्लम. पॉलिसी मेकिंग एडॉक है, टाइमिंग की बात हुई, क्लोजर्स की बात हुई, ये चीज़ें वी कैन दिस इज नॉट गोइंग टू ये अनप्लान्ड एडॉक डिसीजन मेकिंग से हम we can, this is not the way things should happen in this country. You need to have very clarity. If retail is going to be given importance, तो फिर ये ad hoc decision making भी नहीं होगी जो कि बहुत नुकसानदेह है. And हमारी अगर बात करें, ये भी एक चैलेंज है कि हम इसे अभी थोड़ी मैं बात कर रहा था कि लॉन्ग टर्म विजन और बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है हमारे अपने बिजनेसेस के लेवल पे और मैक्रो लेवल पे जो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है. तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आर होल्डिंग अस बैक. What we need to do, three things the retailers can do primarily. बहुत सारी चीज़ें हैं. You have to collaborate more, exchange information. मिसाल के तौर पे हमसे अक्सर बात होती है कि some people when they talk to each other they get to know या ये लोकेशन अच्छी है या नहीं अच्छी, ये रेंट सही है या नहीं सही, ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है. इससे आपको पता नहीं है कितने करोड़ों की लोगों को सेविंग होती है. हमारे मेंबर्स को, मुझे हुई है, बहुत सारे लोगों को हुई है. बस बात करें एक दूसरे के साथ, हम डर रहे होते हैं. Just need to collaborate and exchange more information with each other. दूसरी बात है कि हम एक ही स्लाइस ऑफ द पाई के ऊपर लड़ रहे होते हैं. वही बात है, एक ही लोकेशन, एक ही बंदा, हर चीज़. अभी पाई को बड़ा करते हैं ना, लोगों को ट्रेन करें, जगह मिल के डेवलप करें, मार्केट डेवलप करें. बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम मिल के काम कर सकते हैं, बजाय उसी टुकड़े से के ऊपर हम लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. एंड इंटरनेशनल जाना है हमें. दिस इज़ द विजन. वी हैव टू गो इंटरनेशनल. हमें पाकिस्तान अपनी जगह पे यहाँ पे काम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी से सोचना शुरू करें कि बाहर किस तरह से हम जाएंगे, किस तरह से अपने बिजनेस को लेके जाएंगे. ई कॉमर्स के जरिए करें, मिलकर करें, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करें. स्टोर्स तो महंगा प्रोपोजिशन है, बट वी हैव टू गो इंटरनेशनल वन वे और द अदर. वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ इफ वी हैवंट ऑलरेडी. व्हाट वी नीड आर कोलैबोरेटर्स टू डू, यानी जो हमारे जो इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के जो लोग हैं, व्हाट वी नीड देम टू डू, वी नीड योर हेल्प इन अनलॉकिंग म्यूचुअल एफिशिएंसीज, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स. So many areas where we can work together. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, बहुत सारे एरियाज के अंदर वी कैन वर्क टुगेदर. AI की बड़ी बात होती है, बट वी हैव टू फाइंड थिंग्स टुगेदर. एंड आई कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दीज कॉन्फ्रेंसेज आल्सो दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड दैट्स हाउ वी आर वर्किंग विद आवर पार्टनर्स आल्सो ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड आउटसाइड दिस कॉन्फ्रेंस टू वर्क ऑन दीज थिंग्स टुगेदर. लॉन्ग टर्म प्लान मिल के बनाना है हमें. इफ यू आर ऑल ऑन द सेम पेज इवेंचुअली ऑन सर्टन थिंग्स, नो व्हाट वी नीड, then we can move forward, because we need to focus, we need to combine our energies, our thoughts. और फिर उसके बेसिस पे हम एक कलेक्टिव वॉइस के साथ अपनी चीज़ें मनवाएंगे. क्लियर तो हो पहले आपस में, फिर मनवाएंगे. अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन इट्स अ फ्रैगमेंटेड सिचुएशन. कोई और एक बंदा जा रहा होता है, कुछ और बात कर रहा होता है, कोई और जा रहा होता है, कोई और बात कर रहा होता है. फिर वो भी कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं उससे तो ये कहा था, उससे तो ये कहा था. तो जब तक ये कंबाइंड वॉइस हमारी इकोसिस्टम की नहीं होगी, ई कॉमर्स के ऊपर, रिटेल के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वी विल नॉट, इन माई ओपिनियन, बी एबल टू गेट दैट इम्पैक्ट विच वी नीड टू मेक. पॉलिसी मेकर्स से भी तीन आस्क्स हैं कम अज़ कम. मतलब ये तो शुरुआत है, कि 20-25 होंगे. कि जैसे अभी बात हुई कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है रिटेल की, तो कुछ काम अगर हो हम भी करेंगे, लेकिन खुद भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें. Look at the economies that are supporting retail and why they are doing it. Inclusive policy making, we don't get chance to, unfortunately, even though we've tried many times. Ministers change, chairman change of FBR, people change. Every time we have to start again and again and again and again and again. And we are making efforts. But if there is not a thought process of inclusive policy making, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा. तभी इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग होगी तो फिर काम मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी डोमेस्टिक कॉमर्स बूस्ट होगा.
एक्सपोर्ट भी तभी बूस्ट होंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ वी नीड दैट 15-year प्लान रोड मैप टू कम टुगेदर। जो कंबाइंड वॉइस की बात करते हैं, इसके बगैर आप अपने बिजनेस में देख लें, अगर आप मंथ टू मंथ चलेंगे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर आप 5 years का प्लानिंग करते हैं, ठीक है, यू ट्वीक इट अलॉन्ग द वे, बट इफ यू प्लान वेरी क्लियरली then you come somewhere close to where you wanted to get your destination. So these are the 3 things that we need from the policymakers. Before I end this, I just want to play a video that we made based on sort of what we believe is one of the contributions of the retail sector does to this country. बहुत सारी चीज़ें हैं, but एक और thought के साथ आपके साथ छोड़ना चाहेंगे. And please play that and then I will conclude. मैं ये चाह रहा था कि हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समेटें, क्लैरिटी की तरफ आए। एंड ऑफ कोर्स ये सब पूरा हमारी एज एन ईसी, एज अ लीडरशिप टीम, एज आर मेंबर्स, ये सारे वो चीज़ें थी जो कि हमने इस पे काम किया, काम आगे हमें करना है। सबसे ज़्यादा बात ये, हम अभी तो जर्नी शुरू हुई है हमारी एज रिटेल। कभी कभी सोचता हूँ कायदे आजम ने पाकिस्तान क्यों बनाया था। ब्रिटिश राज में भी तो जिंदगी गुजरी रही थी। सिर्फ एक ही रीजन समझ आता है, इज्जत। लेकिन आज जब अपने शहर में घूमता हूँ तो हॉस्पिटल्स हों या दफातर, सड़कें हों या मोहल्ले, कहीं इज्जत नहीं मिलती। लेकिन फिर इन शहरों के बीचों बीच कुछ जजीरे नजर आते हैं, और इन जजीरों पर तो जिंदगी ही मुख्तलिफ है। यहाँ सब कुछ साफ शफाफ होता है, हर तरफ रोशनी है, यहाँ पसीना भी नहीं आता, और यहाँ कोई दरवाजे पर रोककर ये नहीं पूछता आप कहाँ से आए हैं। यहाँ कोई गम भुलाने आता है और कोई खुशियाँ मनाने। यहाँ सबको अपनी अपनी जेब के हिसाब से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और वो इज्जत जो सारे पाकिस्तान में ढूंढने से भी नहीं मिलती, यहाँ मुफ्त में मिलती। ये इज्जत सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, बल्कि उन्हें भी मिलती है जो यहाँ काम करते हैं, चाहे वो किसी बड़े स्टोर के सेल्स पर्सन हो या दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ छोटों का भी ख्याल रखा जाता है और बड़ों का भी एहतराम किया जाता है। यहाँ आकर चंद घंटों के लिए हम अपने सारे मसाइल भूल जाते हैं कि घर पे लाइट है कि नहीं, पानी आया कि नहीं, गैस आने वाली है या फिर जाने वाली है। काश कि मेरा सारा पाकिस्तान इन जजीरों जैसा हो जाए। तो ये जो जजीरे हैं, ये पूरा पाकिस्तान ही हम इसको ऐसे बनाते हैं इंशाल्लाह, रिटेल इकोसिस्टम को। सो आई बिलीव, जस्ट वांट टू एंड इट हियर कि द फ्यूचर ऑफ रिटेल इज़ ब्राइट इंशाल्लाह, और हम सब मिल के इसको ब्राइट करेंगे और पाकिस्तान को हम भी उसको बुलंद करेंगे। लेट्स मेक इट पाकिस्तान शाइन टुगेदर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।